Assalamu alaikum. Today we are going to start a new concept in Islamic banking. Islamic banking में हमने आज एक new topic discuss करना है. As you can see on the screen, that is about istisna. Now, what do we mean by istisna? Before this concept, we had discussed the concept of salam. सलम में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं and we had discussed that salam was a kind of sale but with certain exception because salam में ऐसा होता था कि commodity was transacted before it was come into existence. So same is the case here. istisna में भी कुछ resemblance है salam के साथ but with a bit difference. salam और istisna में कुछ differences पाए जाते हैं जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इस्तिस्ना, सो इस्तिस्ना इज़ अ सेकेंड काइंड ऑफ सेल वेयर a commodity is transacted before it comes into existence. Istisna is a second kind of sale. The first kind of sale is salam with an exception. और वो exception क्या थी? वो exception ये थी that the commodity was transacted before it come into existence. हमने सेल के जब रूल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने ये कहा था कि according to the rules of sale, the commodity must be existing at the time of sale. जिस टाइम आप सेल कर रहे होते हैं उस टाइम कमोडिटी का एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है. बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आई थी सलम, और जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है इस्तिस्ना. सलम में भी ऐसा ही था कि कमोडिटी वॉज ट्रांजेक्टेड बिफोर इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सेम इज़ द केस in istisna के the commodity is transacted before it comes into existence. That's why कहा गया है that istisna is a second kind of sale. The first kind of sale with exception is salam and the second kind of sale with exception is istisna. Now what happens in istisna? It means to order a manufacturer to manufacture a specific commodity for the purchaser. यहाँ पे क्या होता है istisna में हमारे पास buyer and seller है but seller manufactures the commodity, seller manufactures the product for the buyer. Seller manufactures a specific product for the buyer according to his demand, according to his order, according to his specifications. So now if the manufacturer undertakes to manufacture the goods for him with material from the manufacturer, the transaction of istisna comes into existence. तो istisna का बेसिक थीम ये है कि हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं because it's a kind of sale. So obviously we have a seller and we have a buyer, but what happens here is that seller manufactures a specific commodity for the buyer. In this case, seller is a manufacturer. Basically, he manufactures the products for the buyer according to the specifications that are provided by the buyer. Buyer अपनी कुछ specifications, कुछ जो उसकी necessities हैं वो manufacturer को बता देता है that I need a product of this kind, I need a product with these kinds of features and with these qualities and with this characteristic. तो फिर जो seller होता है वो इस product को according to the need, according to the requirements of the buyer, वो उस product को manufacture करता है buyer के लिए. But here you have to keep in view, here you have to keep in mind certain points. अपने certain points को mind में रखना होता है. The price in case of istisna is fixed. Price fix हो जाती है at the time of contract with the consent of both the parties, with the consent of manufacturer and the buyer. The price is fixed at the time of contract and the specification of the commodity is also fixed at that time. दोनों काम एक price और दूसरी commodity की specification at the time of contract फिक्स हो जाती है, एग्रीड हो जाती है between both the parties so that no ambiguity may be left behind. Now, the contract of istisna creates a moral obligation on the manufacturer to manufacture the goods because it is the responsibility of the manufacturer that now he has to manufacture the goods because a contract, a dealing has been done between both of them. So he starts the work and any one of the parties can cancel the contract after giving notice to the other. In this case, what happens is that any one of the parties, either the manufacturer or the buyer, can also cancel the contract after giving a notice. First of all, any one of the parties has to give notice
to the other party if he wants to cancel the contract. So he has to give a notice to the other party that he wants to cancel the contract. But here in this case you have to keep in mind that if the manufacturer has started work on the commodity, ठीक है, उसने कमोडिटी पे काम स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहते हैं, सो नाउ इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड यूनिलेटरली। मीन्स अब मैन्युफैक्चरर ने कमोडिटी पे काम स्टार्ट कर दिया है और आप उसे कहते हैं कि अब आपको ये कमोडिटी नहीं चाहिए, तो इस पॉइंट पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर भी विलिंग है इस चीज़ पे कि येस ही डजंट वांट टू मेक या ही डजंट वांट टू मैन्युफैक्चर द कमोडिटी, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बायलेटरली। अगर दोनों तरफ विलिंगनेस है, दोनों तरफ एग्रीड हैं पार्टीज़ दैट दे वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैन्युफैक्चरर ने कमोडिटी पे काम स्टार्ट कर भी लिया है, उसके बाद भी अगर दोनों पार्टीज़ चाहती हैं दैट दे वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एनी रीज़न, देन दे कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरली। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड यूनिलेटरली। यूनिलेटरली मीन्स कि मैन्युफैक्चरर ने काम स्टार्ट कर लिया है एंड ही इज़ विलिंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, बट द क्लाइंट इज सेइंग, बट द बायर इज सेइंग दैट ही वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैन्युफैक्चरर इस बात पे राज़ी नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम। हम कहते हैं कि इस्तिस्ना एंड सलम बोथ आर द काइंड्स ऑफ सेल जिसमें कमोडिटी इज़ ट्रांजैक्टेड बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम। व्हाट आर दीज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस? द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट द सलम ऑफ इस्तिस्ना इज़ ऑलवेज अ थिंग विच नीड्स मैन्युफैक्चरिंग। इस्तिस्ना का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। हर वो प्रोडक्ट जो कि आप मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग जिसके लिए चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड होती है, हर वो कॉन्ट्रैक्ट इस्तिस्ना के थ्रू हो सकता है। जबकि सलम में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मैन्युफैक्चरिंग इज़ रिक्वायर्ड। समटाइम्स इट हैपन्स दैट द product is already available but it is not existing at the time of sale। सलम में क्या होता है, कभी आपने क्रॉप्स ग्रो करनी है तो उसकी आपने जो है डीलिंग कर ली है बायर के साथ, या लेट्स सपोज़ आप एक ट्रेडर हैं और आपको पैसे चाहिए उसके लिए ट्रेडिंग के लिए या बिज़नेस के लिए, और फिर जो बिज़नेस की यील्ड होगी, मींस जो भी बिज़नेस प्रोडक्ट क्रिएट करेगा उसका कुछ पोर्शन आप बायर को प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग एक कंडीशन नहीं होती। बट इस्तिस्ना के केस में आपको ये कहा गया है दैट the product that needs manufacturing, only that product can be dealt by means of istisna। इस्तिस्ना आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। कोई भी ड्रेस है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी बिल्डिंग है जिसको मैन्युफैक्चर करना है, या कोई भी फर्नीचर है जिसको मैन्युफैक्चर करना है, तो इस तरह की डीलिंग्स आप इस्तिस्ना के थ्रू कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ दैट it is necessary for salam that the price is paid in full in advance, while it is not necessary in istisna। सलम के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट द एडवांस पेमेंट ऑफ प्राइस इज़ डन because the commodity will be transferred to the buyer on some future date, but the price is received in full in advance, because जो salam है that is basically to meet the needs of small farmers and traders। That's why we say that the price must be received by the seller in advance and in full, ताकि उसका जो पर्पज़ है ये सलम करने का वो अचीव हो सके। लेकिन इस्तिस्ना के केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्राइस इज़ फिक्स्ड। अगर आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहें, अगर दोनों पार्टीज इस पे एग्रीड है एंड विलिंग है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। या लेट्स सपोज अगर आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, या लेट्स सपोज द बायर सेज टू द मैन्युफैक्चरर दैट वंस यू मैन्युफैक्चर द कमोडिटी देन आफ्टर दैट आई विल मेक द पेमेंट। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर एंड बायर पे दैट व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग इज़ डन बिटवीन देम रेलिवेंट टू द प्राइस, रिलेटेड टू द प्राइस। सो Salam में advance payment and full payment is necessary, but it is not necessary in case of istisna। Okay, now what is the third point of difference? The contract of Salam once effected cannot be cancelled unilaterally, while the contract of istisna can be cancelled before the manufacturer starts the work। अब
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम में ये है कि अगर एक मरतबा ये स्टार्ट हो गया सलम का कॉन्ट्रैक्ट तो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड यूनिलेटरली, ये यूनिलेटरली कैंसिल नहीं हो सकता, बट इस्तिस्ना कैन बी कैंसल्ड बिफोर दी मैन्युफैक्चरर स्टार्ट्स दी कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आप कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरर भी विलिंग है और क्लाइंट बायर भी विलिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्तिस्ना कैंसिल हो सकता है। The fourth point is that the time of delivery is an essential part of the sale in Salam, while it is not necessary in Istisna that the time of delivery is fixed. सलम के केस में क्या है कि टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत मैटर करता है, क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी पे ही सलम की प्राइस बेस्ड होती है। लेकिन इस्तिस्ना के केस में टाइम ऑफ डिलीवरी अगर फिक्स ना भी हो देन इट्स ओके, मींस जनरली मैन्युफैक्चरर बता देता है क्लाइंट को, बायर को, दैट आई विल मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विद इन 2 वीक्स और विद इन अ मंथ, बट एग्जैक्ट डेट अगर इस्तिस्ना में डिसाइड नहीं भी हुई होती देन इट्स ओके। बट सलम के केस में एग्जैक्ट डेट का पता होना ज़रूरी होता है, बिकॉज जो पार्टी है, जो बायर है, उसने एडवांस पेमेंट की होती है प्राइस की, तो इस वजह से उसे फिक्स डेट का पता होना ज़रूरी होता है कि कितने टाइम में उसको प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। और सेकेंडली सलम में हम जो प्राइसेस डिसाइड करते हैं वो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की बेस पे ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने अरसे बाद प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन इस्तिस्ना के केस में प्राइस चूँकि ऑलरेडी फिक्स हो चुकी होती है और एक ही प्राइस होती है, उसमें चेंजेस नहीं आती और एडवांस पेमेंट भी नहीं है प्राइस की, तो दैट्स वाई जो टाइम ऑफ डिलीवरी है वो भी अगर फिक्स ना हो तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Salam and Istisna. In the next video, we are going to discuss a difference between Istisna and Ijara. So hopefully in this video there is no confusion. Thank you class.